थैंक यू मुस्कान. ओहो, मैसेज क्यों डिलीट करती. Employee. Okay. 21 who is preparing for CA Inter. Best of luck. Okay, so I am starting my live session. Today I am planning to cover employee cost. Let's see. Let's take a break on 7:30. Okay. I will reply everyone at 7:30. Till then, only study. Okay. Okay, now focus.
Let me know in the comment box how you are preparing for your exam. I am preparing for only following ICI material and RTP, NTP, PYQ. Direct labor cost identified in 1 unit of each in payment made or to be made to an employee by the employer is in cash or kind, that is employee cost. Topics to be covered: effective per hour labor cost, overtime, incentive schemes, time rate, fixed rate, tax plan, bond plan, labor turnover, etc. Effective per hour labor cost, overtime, incentives and labor turnover. Fine. Determination of labor cost: basic salary, yearly allowances, other allowances, perquisites, bonus, commission, employer's contribution like ESI, PF, gratuity, pension, then total labor cost. Employees contribution provident fund হলে সেটা অ্যাড করে নিলাম, ওকে, বাট এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন হলে it should be added. Total labor hours: total time spent by an employee inside factory premises. যতক্ষণ কাজ করবে সেটা এফেক্টিভ আওয়ার্স, যে সময়টা কাজ হয়নি সেটা আইডল টাইম। নর্মাল আইডল টাইম টু টাইপস: নর্মাল আইডল টাইমস, অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম। ইনহেরেন্ট ইন এনি জব, যেমন খাবার খেতে যেতে যে টাইমটা যায় সেটা নর্মাল আইডল টাইম। অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম নট ইনহেরেন্ট ইন এনি জব, লাইক আনফরচুনেট সার্কামস্টেন্সেস, লাইক এক্সাম্পল হঠাৎ করে কিছু বন্ধ হয়ে গেলে, যেমন পড়ার সময় হঠাৎ করে গেস্ট এসে গেলে, সেটা অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম হয়ে যাবে। সো অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম অলওয়েজ কস্টিং পেলে যায়। এফেক্টিভ লেবার আওয়ার্স: টোটাল আওয়ার্স মাইনাস নর্মাল আইডল টাইম। অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম আমরা এখানে নেব না, এফেক্টিভ লেবার আওয়ার্সে আমরা টোটাল আওয়ার্স থেকে জাস্ট নর্মাল আইডল টাইমসটা বাদ দেব। এফেক্টিভ লেবার আওয়ার্স মানে যতক্ষণ কাজ করেছি। এফেক্টিভ লেবার কস্ট পার আওয়ার, কস্ট পার আওয়ার। এফেক্টিভ লেবার আওয়ার্স, টোটাল লেবার কস্ট ডিভাইডেড বাই এফেক্টিভ লেবার আওয়ার্স, মানে এক এক ঘন্টায় কত টাকা লেবার কস্ট করছে, কত টাকা এমপ্লয়িকে দিতে হচ্ছে 1 ঘন্টা কাজ করানোর জন্য। যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে সমস্ত কিছু বেসিক প্লাস ডি এর উপর পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করা হয়। ওকে, ফাইন। Now, labor cost like wages and salary, allowance, incentives, payment and for overtime, employers' contribution, provident fund and other welfare funds, other benefits, leave pay, free or subsidized food, leave, travel, concession, etc. এগুলো হচ্ছে employee cost. Okay. Classification of employee or labor cost. Classification cost of work is classified into direct employee cost, indirect employee cost, benefits paid or payable, which can be attributed to a cost object in an economically feasible manner. This can be easily identified and relevant to an activity control cost center, customer, process, product, and benefits paid or payable to the employees, which cannot be directly attributed to the particular cost object in an economically feasible manner. Indirect employee cost যেটা ডাইরেক্টলি অ্যাট্রিবিউটেবল নয়, আমরা এখানে পড়েছিলাম। ইনডাইরেক্ট না, আমরা এখানে ডাইরেক্ট লেবার কস্ট করেছি, যেটা কিনা আইডেন্টিফাইড ইন 1 ইউনিট অফ এফজি, মানে একটা প্রোডাক্ট বানানোর জন্য আমি কতটা লেবার দিচ্ছি আর সেই লেবারটা দেওয়ার জন্য আমি কত টাকা পাচ্ছি, সেটাই আমার লেবার কস্ট। এনি পেমেন্ট মেড or to be made to an employee by the employer. Okay. Fine. Next, distinction between direct or indirect employee cost. It is cost incurred in payment of employees who are directly engaged in production process, who are not directly engaged in production. The revision class is also have to be first. Can be easily identified and allocated
and apportioned indirect employee cost is apportioned on some appropriate basis. Direct employee cost varies with the volume of production. Indirect employee cost may not vary with the volume of production. Direct employee cost varies with the volume of production. Indirect employee cost may not be vary with the volume of production. Okay, employee cost control. The aim should be to keep the wages per unit of output as low as possible. Okay. Employee cost control. তাদেরকে যত কম টাকা দেওয়া যায় ততই মানে কস্টটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, কম টাকায় কাজ করাবো। ওকে, personal department functions. A well-motivated team of employees can bring about wonders. Each concern should therefore constantly strive of employee. The efforts for the control of employee cost should begin from the very beginning. There has to be concerted effort by all the concerned departments. Personnel department, engineering and work study department, timekeeping department, payroll department, cost accounting department. Okay, আমার ফোনটা do not disturb করতে ভুলে গেছি। Hi Jia. Jia, are you also preparing for C exam? Okay, we'll talk on. Okay, we'll talk at 7:30. Okay. Till then, silent study. Okay. Personnel department, engineering and work study department, timekeeping department, payroll department, cost accounting department. These are the department involved in employee cost. Functions. Personnel department is on receipt of employee requisition from the various departments. It searches for the required skills and qualification. It ensures that the persons recruited process the requisite qualification and skills required for the job. Arrange proper training for the newly recruited employees and workshops for existing employees. তাহলে পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট কি করছে, পার্সন সার্চ করছে, এনশিওর করছে যে পার্সনটা কোয়ালিফাইড আর স্কিলস আছে তার মধ্যে কাজ করার মতো, দেন প্রপার ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করছে, দেন তাকে কাজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও মেইনটেইন অল পার্সোনালস অফ জব রিলেটেড রেকর্ডস অফ দ্য এমপ্লয়িজ, ইভ্যালুয়েশন অফ পারফরম্যান্স ফ্রম টাইম টু টাইম। Okay, fine. Engineering and work study department prepares plans and specification for each job, providing training and guidance to the employees, supervise production activities, conducts time and motion studies, undertakes job analysis, conducts job evaluation. Engineering and work study department ঠিক আছে প্রিপেয়ার করছে প্ল্যান অ্যান্ড স্পেসিফিকেশনস ফর দ্য জব, কোন কাজে কোন লোককে ঢোকানো উচিত সেটা সুপারভাইজ করছে, সেরকম ট্রেনিং দিচ্ছে, গাইডেন্স দিচ্ছে, টাইম অ্যান্ড মোশন স্টাডিজ কন্ডাক্ট করছে, দেন জব অ্যানালাইসিস করছে, দেন জব এভালুয়েশন করছে, দ্যাটস ইট। ওকে, টাইম কিপিং ডিপার্টমেন্ট concerned with the maintenance of attendance records, that is time keeping and time spent by an employee on various jobs, that is time booking. আচ্ছা,
concerned timekeeping department concerned with the maintenance of attendance records. That is timekeeping. Maintenance of attendance records. Timekeeping. অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড করা হলে সেটা টাইম কিপিং, আর কতটা টাইম এমপ্লয়িটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে টাইম বুকিং অন ভেরিয়াস জবস। Okay, fine. Payroll department. The preparation of payroll of the employees, it disburses salary and wage payments. Cost accounting department. Accumulation and classification of employee cost. Payroll department, the preparation of payroll of the employees and disburse salary and wages. সবাই payroll department কি করে, সবাইকে স্যালারি দেয়, ওকে মনে রাখবো। আর cost accounting department হচ্ছে accumulation and classification of employee cost. Analysis and allocation of cost to various cost centers and cost objectives. Important factors for the control of employee cost. To exercise an effective control over the employee cost, the essential requisites is efficient utilization of employee and eight factors. The main important factors for the control of employee costs. কোন factors গুলো important for control of employee cost? কম টাকা দেওয়ার জন্য, মানে যেভাবে টাকা বাঁচানো যায় যত। আচ্ছা, for controlling employee costs, the following have to be following factors should consider. Assessment of manpower requirements, control over timekeeping and time booking, time and motion study. Assessment of manpower requirements, control over timekeeping and time booking, time and motion study, control over idle time and overtime. মানে কাউকে অযথা টাইম নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না, মানে কোনো এমপ্লয়িকে আমি স্যালারি দিয়ে কাজ করাবো, যত পারবো নিতে পারবো। আচ্ছা, control over employee turnover, wage and incentive systems, job evaluation, merit rating, employee productivity. Achha, collection of employee costs. The task of collecting employees' cost is performed by the cost accounting department, which records separately wages per certain the effective wages paid per hour to analyze the total payment of each department, direct cost plus to analyze the total payment of each wages of each department, the amount included in the direct cost of goods produced, indirect employees cost plus and thus included in overheads, amount treated as employee cost, amount included in direct cost of goods produced, indirect cost included in overheads, idle time, hence loss, the amount treated as abnormal loss, transferred to profit. Collection of employee cost. Cost accounting department, which records separately wages paid to direct and indirect employees. It is the duty of the department to ascertain the wages paid per hour in each department to analyze total payment of wages of each department. Okay, that is not exactly important for you, I think. The amount treated as abnormal gain and to be transferred to profit and loss account. Through this process, cost of various jobs are ascertained. Naturally, this the payroll procedures, attendance procedures for timekeeping. This is important from every point of view, I think. Timekeeping, time booking. These are important terms. Payroll procedure, idle time. Let's see a quick check. Overtime. Acha, here is illustration 1. We are going illustration 2. Overtime. Illustration 3. Overtime and treatment of overtime. Then illustration 4. Total how much illustration is there? There are 19 maths. Have to complete by end of the day. Let's see if we are able to complete it or not.
interesting due to it's a tough chapter. Oh, this illustration 14 came in May 26. And I did it, I think. Yes, I did it. Okay, so we have to complete those all those illustration and practical questions along with my YouTube free lectures questions. Have some. So total let's count 25, maybe 25 maths. Okay, so where we were in this page. Yes, this page. Attendance and payroll procedures. We will cover theory, maths, all things. Hi Riddhi. Are you watching? Well, let me know. So I will read every comment at 7:30. Okay. Okay. Now, attendance and payroll procedures. Attendance procedures timekeeping. It refers to correct recording. Difference between timekeeping and time booking. The latter refers to breakup of time on various jobs. Time booking means breakup of time on various jobs, but inside the factory, while the former implies a record of total time spent by the employees in a factory. Okay, understand. Read it again. It refers to correct recording of employee attendance time. Students may note the difference between timekeeping and time booking. The latter refers to breakup of time on various jobs, while the former implies a record of total time spent by the employees in a factory. Okay. So we are studying now timekeeping. So timekeeping means attendance procedures, like total time spent by employee in a factory. Objectives of timekeeping: correct recording of employees' attendance time is of utmost importance, where payment is made on the basis of time work. Where payment is made by result is straight work, it would still be necessary to correctly record attendance for the purpose of ensuring that proper discipline and adequate rate of production are maintained. The objectives of timekeeping are as follows: for the preparation of payrolls, for calculating overtime, for ascertaining and controlling employee cost, for ascertaining the idle time, for disciplinary purpose, for overhead distribution. মানে টাইম কিপিং মানে হচ্ছে যে আমি লেবারের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটা ফ্যাক্টরির ভেতরে লেবারের অ্যাটেন্ডেন্স কতক্ষণ হচ্ছে, লেবার কতক্ষণ কাজ করছে, লেবার বা এমপ্লয়ি কতক্ষণ কাজ করছে, তাকে কতক্ষণ ওভার টাইম করছে, তাকে সেই হিসাবে টাকা দেওয়া হবে, তার জন্য এটা হিসেব রাখা হয় টাইমটা। আচ্ছা, মেথডস অফ টাইম কিপিং. There are various methods of timekeeping which may be categorized into manual and mechanical methods. The choice of a particular method depends upon the requirements and policy of an entity. But whichever method is followed, it should make a correct record of the time by incurring minimum possible expenditure. Read it again. Methods of timekeeping. There are various methods of timekeeping which may be categorized into manual and mechanical methods. So two types of methods are there: manual methods and mechanical methods. Okay, the choice of a particular method depends upon requirements and policy of an entity. Entity নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা মেথড
নিতে পারে, but whichever method is followed, it should make a correct record of the time by incurring minimum possible expenditure, and it should be minimize the risks of fraudulent payments of wages. যেই মেথডটাই কোম্পানি বেছে নিক না কেন, সেই মেথডটা দিয়ে যেন কমসে কম টাকা খরচ হয়, স্পেন্ড হয় আর কি, কস্ট ইনকার হয় কম, সব থেকে কম, minimum possible expenditure should incur, okay, and should minimize the risks of fraudulent payments of wages. Fraud payment যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। Okay. The example of timekeeping methods are follows: manual methods and middle discounted. What is this? Token manual methods. Okay. Under manual methods there are two. Okay. Under manual methods there are two type of methods, and mechanical methods there are two type of methods. Okay. Manual method, attendance register method. Under this method, an attendance register is kept to record the arrival and departure time of an employee. This method is simple and inexpensive and is suitable for small organizations. However, this method may lead to dishonest practice of time manipulation by way of recording wrong time and back a date entry in collision with timekeeper. Attendance register method মানে যখন এমপ্লয়ি কাজে আসবে তখন সে কোন টাইমে এসেছে নিজেই দেখে নিজেই রেকর্ড করে দেবে, বাট that may lead to dishonest practice. ওকে, কেউ কেউ ইচ্ছে মতো ভুল টাইমিং লিখে দিতেই পারে। ওকে, রং টাইমিং, ব্যাক ডেট এন্ট্রি, কালকেও এসেছিলাম লিখে দিল, দেখা গেল। Okay, metal discount or token method. This method of time recording is very old and is almost obsolete in practice. Under this method, each employee is allotted a metal disc or token with a hole bearing his identification number. The token is kept or handed to the timekeeper who records the token number in his register, like attendance register method. This method also has some disadvantages like error in recording, proxy attendance, etc. মানে এখানে মেটাল or টোকেন মেথডে একজন থাকবে যে কিনা সবকিছু লিখে দেবে, মানে রেকর্ড করে দেবে কে কখন আসছে না আসছে, তাকে টোকেনটা দেবে, যে আসবে তার নিজের টোকেন দেবে, সেই টোকেনের মধ্যে যে নাম্বারটা থাকবে সেটা লিখে দেবে। কিন্তু এর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কি, যিনি নাম্বার লিখছেন, যিনি কিনা রেজিস্ট্রার, তাকে একটু ভুল খাইয়ে দিলে সে তো ভুলটা লিখে দিতেই পারে, না লেখার কিছু নেই। আচ্ছা, টাইমকিপার। ওকে, টাইমকিপার এই যে টোকেন মেথডে একজন থাকবেন যিনি হচ্ছে টাইমকিপার, তাকে দিলে, তাকে টোকেনটা দিলে সে টোকেনের নাম্বারটা লিখে রেজিস্টার করবে। ওকে ফাইন, এখানে এত বেশি টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই, বিকজ আমাদের প্র্যাকটিক্যাল হবে। মেকানিক্যাল আর অটোমেটেড মেথডস, পাঞ্চ কার্ড অ্যাটেন্ডেন্স, এটা বুঝে গেছি, পাঞ্চ কার্ড করে ঢুকে যাবো। বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স, তো হাতে ছাপি ঢুকে যাবো, বুঝে গেছি। আচ্ছা, requisites of a good timekeeping system should not allow proxy for another employee. একটা good timekeeping system কেমন হবে? Should not allow proxy for another employee, provision of recording of time of peace employees, so that there should also be a provision of recording of time of peace employees, so that regular attendance and discipline may be maintained. This is necessary to maintain uniformity of flow of production. Time of arrival as well as time of departure of employees should be recorded. কখন আসছে কখন ঢুকছে সেটা রেকর্ড করতে হবে, সো দ্যাট টোটাল টাইম অফ এমপ্লয়ি কতক্ষণ ফ্যাক্টরিতে ছিল সেটা যাতে বের করা যায়, এবং সেই অনুযায়ী তাকে যাতে ওয়েজেস দেওয়া যায়, wages pay করা যায়। Okay, as far as possible method of recording of time should be mechanical, so that chances of disputes regarding time may not arise between employees and the timekeeper আর employees এর মধ্যে যাতে ঝগড়া না থাকে তার জন্য, আর যদি ভুলভাল এন্ট্রি যাতে না হয় সেটা কমানোর জন্য সবথেকে বেস্ট হবে যদি মেকানিক্যাল মেথড ইউজ করা হয়। তাহলে মেকানিক্যাল মেথড যে কোনো একটা পাঞ্চ কার্ড বা বায়োমেট্রিক যা কিছু একটা ইউজ করা যেতে পারে, বাট মেকানিক্যাল মেথডস ইজ consider here as useful. Okay, latecomers should record late arrivals. Any relaxation by the timekeeper is
in this regard will encourage indiscipline. The system should be simple, smooth and quick. Unnecessary quicking for marking attendance should be avoided. Simple, smooth, quick একটা সিস্টেম থাকবে, অযথা কোনো ঝগড়া ঝামেলা যাতে না হয়। কেউ লেট এলে তাকে কোনো রিল্যাক্সেশন দেওয়া যাবে না। The system should be reviewed and maintained periodically to prevent any error. Periodically review করতে হবে, মেইনটেইন করতে হবে সিস্টেমটাকে, যাতে কোনো এরর না হয়, এরর যাতে প্রিভেন্ট করা যায়। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? নেক্সট টপিক, time booking. The time spent by an employee in the premises for production, but it does not show how much time a person spent on a particular job. Time keeping এ একটা এমপ্লয়ি কতক্ষণ ফ্যাক্টরির মধ্যে থাকছে সেটা নির্ধারণ করা যায়, বাট টাইম বুকিং এ একটা জবে, একটা ফ্যাক্টরির মধ্যে হাজার রকম জব থাকতে পারে, হাজার রকম না মানে যাই হোক অনেক রকম জব থাকতে পারে, তার মধ্যে কোন জবে কোন এমপ্লয়িটা কতক্ষণ টাইম দিয়েছে সেটা রেকর্ড করা হলো টাইম বুকিং। Time booking refers to a method wherein each activity of an employee is recorded. This data recorded is further used for measure the time spent on a particular job for costing, measurement of efficiency, fixation of responsibility, etc. Time booking for costing. The time spent on a particular job or activity is used to compute the cost of the job or activity. Time booking to measure efficiency. Time booking for costing, time booking for to measure efficiency, particular job এ কতক্ষণ টাইম লাগলো অনুযায়ী তাকে টাকা দেওয়া হবে, তার জন্য টাইম বুকিং করা হয়। আবার এফিসিয়েন্সি, কত একটা কাজের সে কতটা এফিশিয়েন্টলি ভাবে কাজ করছে সেটা মেজার করার জন্য টাইম বুকিং ইজ বেস্ট of employees are measured by comparing the actual time taken by employees with the standard time that should have been taken. কতটা টাইম নেওয়া দরকার ছিল এবং এমপ্লয়িটা কতটা টাইম নিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করেছে সেটা কম্পেয়ার করা যায় টাইম বুকিং এর জন্যই। টাইম বুকিং ফর ফিক্সেশন অফ রেসপন্সিবিলিটি। দ্য টাইম বুক ডেটা ইজ ইউজড টু অ্যানালাইজ দ্য ভেরিয়েন্স ইন টাইম taken by an employee on a particular job or process with respect to standard time to see the reasons for the variations. The reasons for variation is further classified as controllable and uncontrollable. Okay. Time booking for fixation of responsibility. The time book data is used to analyze the variance in time taken, variance in time taken. যতটা টাইম নিয়েছে তার মধ্যে এবং যতটা টাইম নেওয়া উচিত ছিল তার মধ্যে যে ভেরিয়েন্স বাই অ্যান এমপ্লয়ি অন আ পার্টিকুলার জব প্রসেস উইথ রেসপেক্ট টু স্ট্যান্ডার্ড টাইম যতটা নেওয়া দরকার ছিল তার থেকে যতটা টাইম বেশি বা কম নিয়ে কাজটাকে শেষ করেছে। হ্যাঁ, টু সি দ্য রিজনস ফর দ্য ভেরিয়েন্স। এই যে ডিফারেন্সটা এটা কেন হলো এই রিজনটা বের করা যায় এই টাইম বুকিং এর মাধ্যমে। ঠিক আছে, দ্য রিজনস ফর ভেরিয়েন্স ইজ ফার্দার ক্লাসিফাইড অ্যাজ কন্ট্রোলেবল অর আনকন্ট্রোলেবল। আইদার এই যে ভেরিয়েন্সটা এটা হয়তো কেন হয়েছে সেটা হয়তো কন্ট্রোল করা যাবে কারণটাকে, আর নয়তো কন্ট্রোল করা যাবে না, হয়তো এমপ্লয়িটাই এমনি ফাঁকি রয়েছে তো তাকে কন্ট্রোল করা যাবে না, কিছু করার নেই। The controllable reasons are those which can be avoided by due care and efficiency. On the other hand, uncontrollable reasons cannot be avoided under the normal circumstances. Employees or any other concerned person or departments are made unaccountable for variance under controllable reasons. For the collection of all such data, separate record, generally known as time for or job card, is kept. The time or job card can be of two types. Time or job card can be two types. One containing analysis of time with reference to each job, the other with reference to each employee. Job card দুরকম হতে পারে, এক হচ্ছে containing reference to each job, এক একটা জবে কত আর each employee। এবারে এর ভেতরে কি আছে কনসেপ্ট বুঝবো। A separate job card is employed in respect of a job undertaken. Where a job involves several operations, a separate entry is made in respect of each operation. Thus, the job card would record the total time spent on a particular job or operations. If a number of people are engaged on the same job or operation, the time of all those employees would be booked on the same card. I'm not understanding it. Let's read it again. Okay, one second.
Hi Zayu. I'm just Yes, Vinay, are you there? I will take break on 7:30. I just Hi, you know. Yeah, Zayu, you are a medical student. Oh, that's great. Oh, that's great. That's great. You also do live. Okay, Zayu, why actually I have to complete my schedule? So, I am using to go live in my institute. Okay, great. Today I gave presentation to my classmates on live stream. That's very good. I will check your channel, okay, Zayu? After my live, I will check your channel. Let's back to study. Actually, my syllabus is very vast. We both can go live together. I don't know how can go live together. Okay, I will check. I will check and let you know. Okay. Thank you. Thanks for joining me, Zayu. You can stay. You can join me till length. Let's study together. Okay. One containing analysis of time with reference to each job. A separate job card is employed in respect of a job undertaken, where a job involves several operations. A separate entry is made in respect of each operation. Okay. Thus, the job card would record the total time spent on a particular job or operation. If a number of people are engaged on the same job or operation, the time of all those employees would be booked on the same card. One advantage of this method is that it provides complete data on the employee content of job or operation collectively, so that the computation of employee cost is greatly facilitated. One advantage of this method is that it provides complete data on the one advantage, that is it provides complete data. Okay, if we consider time booking rather than timekeeping, it provides complete data that on the employee content of job or operation collectively, so that the computation of employee cost is greatly facilitated. But this method has drawbacks as well. Since an employee's job timing is scattered over a number of job cards, the time spent on all these jobs and idle time must be abstracted periodically for finding each employee's total idle time. Okay, total time spent on different jobs and the time for which he remained idle during the period. The total of these two times must obviously equal his total attendance time as shown by his attendance record. The other with reference to each employee. In this case, it would greatly facilitate reconciliation of the employee's job time with his attendance time recorded. Under this system, a separate card would be used for each employee for each day or for each week, and the time which he spends on different jobs would be recorded in the same card, so that the card would have a complete history on it as to how his time had been spent during the period the other reference to the employee. Okay.
time booking for fixation of responsibility. One containing analysis of time with reference to the job, other reference to the each employee. In this case, it would greatly facilitate reconciliation of employees' job time with his attendance time recorded. Under this system, a separate card would be used for each employee for each week, and the time which spends on different jobs would be recorded in the same card, so that the card would have a complete history on it as to how his time had been spent during the period. The format of job or time may vary industry to industry and according to the accounting system used. Now, payroll procedure. I plan to complete whole chapter within 1.30 hours but still theory is left and even not started my practical. I don't know how I able to complete this, but okay, let's try my best. Payroll procedure, time and attendance details. See, in costing, theory is also important as it carries 14 marks. Yes, it carries 14 marks. So we have to cover all the theories. We cannot ignore it. Okay. Let's go. Payroll procedure. Steps included in this process are as under time and attendance details, list of employees and other details. কি হচ্ছে এখানে? First of all, time and attendance, then employee details, then wages and salary sheet, then payment after deduction and contribution, then deposit of deduction and contribution. Okay. প্রথমে এখানে টাইম এন্ড অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছে, তারপরে এমপ্লয়ি ডিটেইলসটাও নিচ্ছে, তারপরে ওয়েজ স্যালারি শিট থেকে এটা ডিডাকশন হওয়ার, যেমন পিএফ পিএসআই এগুলো ডিডাকশন হওয়ার ডিডাকশন হয়ে যাচ্ছে, দেন এগুলো ডিপোজিট হওয়ার যেখানে সেখানে ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে, আমার পিএফ অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে। এটাই পেরোল প্রসিডিউরই ব্রড ভাবে ডেসক্রাইব করা। আমাদের কাছে এত টাইম নেই, we don't have that much time, so have to go on next topic. The following are generally deducted from payroll: provident fund, ESI, tax deduction at source TDS, professional tax, voluntary contribution to provident fund, contribution to any benevolent fund, loan deductions, other advances and dues. Okay. Guys, I'm searching for a lecture actually. Okay, each employee of AGC company gets the following benefits basically. What do we have to compute? We have to compute the effective hourly cost of employee X. I think I can do this one. Let's try. This is the first time easy. I should do
Prajapati, okay? Okay. Hi, Mike. Are you also a CA student? Okay, let's back to study. We'll reply everyone at 7:30. Basic pay. Oh, Zayu, you asked what I am studying. I am studying CA Inter Costing, Group 2. Oh, Zayu, you subscribed my channel. Thank you so much. Yeah, sure. I will do after my live end. Okay? Will do for sure. I am taking your name so that you Zayu edit. I don't have no substance someone, but you are a student and I am too, so that's why I did. Okay, I understand. Thank you. If possible, then we'll go live together. Maybe it's not possible, I think, but I will try. Okay, I will try. Okay, bye. Bye, everyone. We'll talk 7:30 again. Bye. Now, focus. Basic pay 10,000, 10k per month. Bonus allowance 20 per month. Okay. Okay. Plus bonus allowance 2,000 per month. 24,000 bonus plus bonus. Okay, anyone, if anyone there, I am doing a sums from costing CA Inter Group to costing employee cost, page number 3.15. Okay, illustration 1. Anyone want to do revision with me? You can join me. Now, bonus 20% of salary and DA. Bonus already बोले दिए इसलिए तो salary and DA 20%. Bonus अच्छी 20%. 800. Other allowances 250. Employers contribution to provident fund, salary and DA report, EPF 10% of salary and DA 144,000 till 10%, that is and here is my total labor cost, that is 144 0 288 00 50,000 X works for 2 2400 ঘন্টার জন্য কাজ করে per annum, out of which 400
unexpected hours are non-productive and treated as normal idle time. You are required to complete. Then আমাদের effective hour কত? আমাদের effective hour হচ্ছে আমাদের effective hours বের করতে হবে. Effective hours of non-productive normal idle time বাদ দিয়ে, that is 2000 hours. 2000 hours. এবারে আমাদের হচ্ছে you are required to compute the effective hourly cost. তো hourly cost মানে cost per hour. Cost per hour তাহলে আমাদের হচ্ছে cost hourly cost or cost per hour same thing, that is 217200 divided by 2000 hours, that is divided by 2000 hours 10. I'm doing mistake maybe. Let's check. 217 divided by 2000 108.6 হচ্ছে, দেখা যাক। Oh, that's great, answer is matched. Next question বলছে in a factory working 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day basic plus DA. At the rate 120% of basic, he is allowed to take 30 minutes of during his hour shift for meals break and 10 minutes recess for rest. During a week, his card showed that his time was chargeable to. ওই কোশ্চেনটা আমার টাফ লাগে আর এই কোশ্চেনটা আমাকে রিভাইজ করতে হবে, আই থিংক, কেন আমি কোশ্চেনটা পাবো না। In a factory working 6 days in a week and 8 hours each day. তাহলে 8 hours 6 day 48 hours, 6 day 8 hours 48 hours total. A worker is paid at the rate of 100 per day basic plus DA at the rate 120% of basic per day, 100 per day basic plus DA at the rate 120% of basic, 120% of basic. He is allowed to take 30 minutes off during his hours. এই অঙ্কটা আমি বুঝতে পারছি না। The time not booked was wasted while waiting for a job and cost account instead. How would you allocate the wages? From the following particulars, এই অঙ্কটাই, বাট এটা এই অঙ্কটা না।
फटाफट तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पिछला चैप्टर आप कवर अप कर लेना, ठीक है। तो जो इंटरनल कॉस्ट है ना, इंटरनल कॉस्ट आ जाएगी, इंटरनल कॉस्ट आएगी हमारी सर ओवरहेड चैप्टर में। तो जब हम लोग मटेरियल की बात की वहां पर हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल है, और यहां पर जब लेबर की बात कर रहे हैं तो लेबर लेने में क्या ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर। अब देखो फैक्ट्री में लेबर के बिना आप एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, आप लेबर के बिना काम कर सकते हो नहीं सर। एक सीए क्या वो आर्टिकल के बिना काम कर सकता है? सर आर्टिकल क्या है? लेबर है सर, ठीक है ना। अब वो क्या लेबर फ्री में काम करेगी? नहीं सर, लेबर तो चार्ज करेगी ना। तो लेबर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट अगर हम लोग बात करें तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर कॉस्ट इज एनी पेमेंट that is made or to be made, right, to an employee by the employer, right, in cash or in time। तो कहते हैं किसी भी तरह की पेमेंट अगर एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को कर रहा है, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट का पार्ट होता है, चाहे वो कैश में कर रहा है चाहे वो टाइम में कर रहा है। टाइम में कैसे? तो गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना। अब गिफ्ट दिया, एम्प्लॉयर ने वो गिफ्ट पहले मार्केट से बाय किया होगा, तो बाय किया होगा तो उसके ऊपर कॉस्ट तो आएगा, राइट। तो एम्प्लॉयर के लिए तो कॉस्ट है, कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट नहीं, तो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट से कर रहे हैं कि सर जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, वो कोई ना कोई खर्चा कर रहा है जिसके ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर इन कैश और इन टाइम, ठीक है। न्यूज़ की बात करें तो मेरे को क्या हो जाएगा, आज पढ़ो देखिए न्यूज़ की बात करें, किसी को बताने को बात नहीं, ठीक है। तो ये सब लेबर कॉस्ट। अब मैंने कहा क्या क्या तरह की पेमेंट, किस तरह की पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर को करता है, किस तरह की पेमेंट करता है बहुत सारे करता है। उसके लिए हमारे पास क्या टॉपिक आया, उसके लिए हमारा जो पहला टॉपिक है, तो पहला टॉपिक लिखते हैं हम लोग इसमें करना क्या कुछ, राइट। उससे आप लोगों को क्लैरिटी देगी सर हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर। सबसे पहले लोग लिख लेते हैं कि क्या कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा इफेक्टिव लेबर कॉस्ट, इफेक्टिव पर आवर लेबर कॉस्ट, ठीक है। टाइम रेट है, उसके बाद हमारे पास पीस रेट आएगा, उसके बाद हमारे पास हालसे प्लान आएगा, राइट, हमारे पास हालसे प्लान आएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा सर, रोकन प्लान आएगा। लेकिन अब ये मैंने थोड़ा देख लिया, क्या अगर सीए की बात करें, अगर सीए की बात करें तो सीए में सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 इंसेंटिव स्कीम्स में पड़ती है, दैट इज टाइम रेट। अगर हम लोग सीएमए की बात करें तो वहां पर ये प्लान थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। वहां पे क्या बट सर मेडिकल बिकॉज़ ऑफ उसको गोल्ड पारे हो आप टॉपिक्स की, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये बताओ मेरे पास ये दोनों टॉपिक है ना, दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी ये इंसेंटिव स्कीम्स वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ओवरटाइम वाला, उसके बाद सर लेबर टर्नओवर वाला थर्ड नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे, क्यों उठाएंगे सर यहाँ पे, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे लोग, ये बेस है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए नहीं आज से आप क्लास ज्वाइन कर लो, फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप जो मटेरियल कॉस्टिंग का बेसिक्स वाला बाद में कवर कर लेना, तो आज का आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो नथिंग कि आप पहले को कवर करोगे और नहीं, आप लोग आप आज से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और शेयर भी कर दो, जो जिसने अपने फ्रेंड के साथ अगर नहीं शेयर करता है तो फटाफट से शेयर कर दो भाई, इससे और क्या अच्छा हो सकता है नहीं, लाइव बैच। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर एम्प्लॉयर जो है वो कुछ खर्चा कर रहा है, किसके ऊपर खर्चा कर रहा है, किसके ऊपर खर्चा कर रहा है, एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रहा है। मैंने कहा क्या क्या किस तरह का खर्चा हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं सर, ठीक है। तो हमने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, जिनके पास बुक्स हैं उनके ऊपर टॉपिक डायरेक्टली दिख जाएगा नंबर डिटर्मिनेशन, उसके ऊपर सिर्फ समझने में ध्यान दो, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, चलो सर डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट क्या कहता है कि सर कितनी तरह का खर्चा हो सकता है, ठीक है, कितनी तरह का खर्चा हो सकता है, तो उसको डिटरमाइन करना है एम्प्लॉयर क्या क्या जो पेमेंट्स है तो एम्प्लॉय को कर सकता है, ठीक। तो हमने देख लेते हैं सब, चिंता बाकी नहीं है। तो पहला खर्चा जो आया मैंने कहा तो बेसिक सैलरी देगा, ठीक है सर। बेसिक सैलरी को देखा ना, बेसिक सैलरी के बिना कैसे बात करेंगे, और फिर दैट इज योर चॉइस, बुक परचेज करनी है या नहीं दैट इज ओनली योर चॉइस, ठीक है। कि सर उस पे सर बेसिक को दे रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्या सर, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, वो कहते हैं सर डियरनेस अलाउंस देंगे। उसके बाद और क्या देंगे, और अलाउंसेस भी हो सकते हैं, ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड अदर अलाउंसेस ऐड करेंगे, अदर अलाउंसेस और भी अलाउंसेस अगर हम एक्स्ट्रा पर्क्स दे रहे हैं, ये अलाउंसेस और जो पर्क्स है, ठीक है। अलाउंसेस और पर्क्स है वो आपको इनकम टैक्स में डिटेल में पढ़ो, वहां पे पढ़ के सैलरी के चैप्टर, ठीक है ना। तो वहां पर आप लोग पढ़ सकते हो, देखिए आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं हम लोगों ने, ठीक है। अगर हम लोगों ने राइट, उसके अलावा क्या है सर, उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए, खुश हो गए, हमसे बोनस दे दिया, तो क्या है उनको कॉस्ट है। हमने सेल्स के ऊपर कमीशन दे दिया, तो कमीशन क्या है, कमीशन क्या हुआ, कमीशन तो कॉस्ट सर, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्यों किया था, वो भी एम्प्लॉयर की कॉस्ट में आई, ठीक है। फिर यहाँ पे अब कल को कुछ तुझे हो जाए तो क्या परिवार से हो, ठीक है। यहाँ मुझे डिफाइन क्या ये जो मुझे करे उसकी इच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट बट अब टोटल आज वर्क करते हुए अब मैं कहता हूं कि एक एम्प्लॉय जो है वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो लगातार 9 घंटे काम नहीं कर सकता। क्या आप लोग लगातार 9 घंटे कर सकते हो, नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, आपको उसको चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास इनकम है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव आवर्स। क्या होते हैं इफेक्टिव आवर्स, इफेक्टिव आवर्स क्या मतलब क्या सर, इफेक्टिव आवर्स का मतलब है एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ, राइट, एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ। तो उसके लिए अब इफेक्टिव आवर्स को निकालने के लिए दो चीजों में, टोटल टाइम को दो चीजों में डिवाइड करें, ठीक है। इफेक्टिव कर रहे हैं सर, दैट इज नॉट मान के चलने की, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक तो 5 अब ये माइनर बिल्कुल सर करेक्ट। Suppose for 2400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive and treated as normal either than you are required to find out. এসে গেছে নাকি ডাবল মশালা, দুটো মশালার সাশের সাথে
थैंक यू बेटी, थैंक यू। 2000 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हम लोग, उसके बाद क्या है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिक पे लिखिए 1000 पर मंथ है। आप एक चीज ध्यान देना, डिवाइडेड बाय फटाफट से प्रति क्लास करेक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़िया इज 700 तो लेबर इज 20 पर हेड पर पेडेज और एक महीने का हमारे 2.5% ऑफ 220 पर क्वेश्चन यहां से क्या कह रहा है 220 का 2 पॉइंट लॉयर पर ए बी कितना सर तब ए बी नॉट टू वेरी वेरी नॉट टू ये क्वेश्चन पर चले तो चलो सॉल्यूशन को सिंपल है क्वेश्चन नॉट टू वेरी वेरी नॉट टू वेरी कोई डाउट क्लियर करो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो, आसान आसान क्वेश्चन है सर। प्रॉब्लम फॉर पर्टिकुलर से आपको लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन की पहली लाइन यहां से बताओ क्या मांग रहा है, वो कह रहा है लेबर कॉस्ट एक दिन की बतानी है, मतलब कि 8 घंटे की कॉस्ट बतानी है। यहां पे लेबर कॉस्ट 1 घंटे की मांग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहली लाइन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स। तो 8 घंटे की एक दिन की शिफ्ट की लेबर कॉस्ट बताओ। चिंता नहीं सर, बेसिक सैलरी क्या है 21 पर डे और बढ़िया मेरे साथ दे रहे हैं 25 पैसा फॉर एवरी पॉइंट ओवर 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग। Basic salary 2 per day. Dearness allowances enough for every point over 100 cost of living index for working class current cost minus current cost of living index for working. अच्छा dearness allowances 25% for every point over 100 cost of living index for working class current cost of living index. For working class current cost of living index is 700 points. Dearness allowances. তাহলে 600 পয়েন্টস হচ্ছে 600 পয়েন্টস ইন্টু 0.25 115 তো पर मैन डे বলেছে লিভ স্যালারি पर মান্থের তো বার করবো না আচ্ছা 30 করবি 60 না 60 হচ্ছে না leave salary 10% of A and B, employers contribution to burden for 8% of A, B and C, employers contribution to state measure 8% of A, B and C, expenditure on amenities to labor 20 per head per month, to labor 20 per head per month, number of working days in a month 25 days of 25 days of 8 hours each per day 25 50 days 150 dearness allowances 200 50 200 150 200 200 এর উপর 10% লিভ স্যালারি মানে 20 220 220 220 এর উপর 8% 220 into 8% 17.6 plus 220 into 2.5% 5.5 expenditure managed to labor per head per month 20 টাকা amenities number of working days 25 days of 80-hour age. Let's check 220 17.6 plus 5.5 plus 20 263.1 263.1 এবারে বলেছে 8
month. Next. A workman is paid 100 per month and earns allowance of 200 per month. There is a provident fund at a percentage, and the employer also contributes the same amount as the employee. The employee state insurance corporation premium is 12% of wages, of which 2% is paid by the employees. It is the firm's practice to pay 2 months as bonus each year. The number of working days in a year are 380 hours each. Out of these, the workers are entitled to 15 days leave on full pay. Okay. Calculate the wage rate per hour for costing purpose. Oh God. A worker is paid 100 per month. তাহলে বেসিক স্যালারি হচ্ছে ট্রাই করি, না পারলে কি আর করা যাবে, 100 per month. 300 are working days in a year are 300 of 8 hours each. 300 হবে 300 into 100 30,000 basic pay plus D কত হচ্ছে per month বলেছে, এটা 1200 হবে। Okay, the earners allowance is 200 per month, 200 per month, 2400. The earners allowance basic pay থেকে বেশি। আচ্ছা, there is a provident fund and the employer also contributes the same amount as the employee. তো কেমন বলে গেছে, তাহলে 240,000 plus 100 into 8.33%, মানে 300 টাকা। 300 টাকা provident fund PS। আচ্ছা, the employee state insurance corporation premium is 12% of wages, of which 2% is paid by the employees, মানে 10% employer pay করছে। Employee costing to employee costing paid by the employee, that means 10%. Corporation premium is 12% of wages. Wages কত? Firms practice to pay 2 months as bonus as each year. আচ্ছা wait, wages মানে আমি basic plus D8 বলে নেব, 2400 plus 1200, এটার 12% হবে না 10% হবে, 360. Yes, firms practice to pay 2 months as bonus, মানে 200 টাকা বোনাস দিয়ে দেয়। বাহ, ভেরি আচ্ছা, 2 months bonus each year. Oh, each year. Firms practice to pay 2 months bonus. 2 months salary as bonus each year. ঠিক আছে, আমি ইয়ারলি দেখছি। তারপরে বলেছে the number of working day in a year are 300 of 8 hours each. Out of these, the workers are entitled to 15 days leave on full pay. Calculate the wage rate per hour costing purpose. ঠিক আছে, 1200 plus 2400 plus 300 plus 360 plus 200, that is 4460. 300 দিনের, 300 দিনের মধ্যে আমার 15 ডে লিভ থাকে ফুল পেতে, তাহলে আমি পে যখন করে তাহলে আমি বাদ দেবো কি দেবো না, ফুল পে। নর্মাল আইটেম টাইম যখন বাদ দিই, কিছু বলা না থাকলে বি প্লাস
বাকিগুলো আবার করলাম। বোনাস বেসিক প্লাস ডি এর উপর ক্যালকুলেট হবে। এটা পুরো বছরের স্যালারি। এক মাসের স্যালারি 300, 2 মাসের স্যালারি হবে 600। যেহেতু বোনাস বলা, বোনাস ইচ ইয়ার বাই টু পে 2 months as bonus each year, স্যালারি বলে দেয়নি 2 months। আচ্ছা 600 হবে, তাহলে 1200 প্লাস 2400 প্লাস 300 প্লাস 360 প্লাস 600 4860। একই মিস্টেক বারবার এখানে আমার রিভাইজ করতে হবে। The number of working day in a year 308 hours each. Out of this, workers are entitled to pay till 15 days only full pay. Calculate the wage rate per hour for costing purposes. মাইনাস হবে, আচ্ছা হবে, নর্মাল আওয়ারের মতো এটাও মাইনাস হবে। 300 মাইনাস 15 মানে 300 মাইনাস 15 285, তাহলে আমার 285 ডেজ। আমার বলেছে ওয়েজ রেট পার আওয়ার। ফার্স্ট আমি একদিনে কত বের করে নিই। 4860 ডিভাইডেড বাই 285, দ্যাট ইজ 17.50। এরপর 8 আওয়ার্স থাকে, 8 আওয়ার্স ডিভাইডেড বাই 8, 2.13। ইয়েস 2.13 ইজ দ্য আনসার। Let's we're still seeing my Index और video. current cost of living index is 700 points. तो ज़्यादा इसमें कुछ मत करना। We're still watching my video. Please let me in the comment section. I'm checking all the comments and now it's time to reply. Okay, so there is no comment to reply. Nice to meet you. Okay, see you. Yeah, nice to meet you too, Zayu. Whoever subscribed my channel just now, thank you so much. Thank you so much, guys. I am ending my session now. Well, some are left, but still I have to end my session here. So meet you again tomorrow. Bye bye. Now it's time to end my live session and now 3 are watching me. Oh god. But I have to end my live session now. My study is over. Not over here, but some are already left, but I have to solve it alone without live actually. So ending my session now. Thank you so much everyone.